the today's lecture, I would like to play one video. That video is also very good. That's why I am playing that video. So I am going to share with all of you, and then we will continue to the lecture. Okay. मैंने जीपीएससी क्लियर किया क्लास 1 गुजरात में रैंक 34 था यूपीएससी क्लियर किया रैंक 570 आईपीएस बिकमिंग द यंगेस्ट आईपीएस ऑफ गुजरात एट सच अ अर्ली एज एंड देन पीपल कम टू यू एंड बोलते हैं आप बहुत नसीबदार हैं यू आर वेरी लकी आई टेल देम इन रिवर्स Anybody tell me voice is audible? Yes, sir. Okay. लक फेवर्स द ब्रेव कोई अपना लक साथ में लेके नहीं आता वो बनाना पड़ता है अगर आपके पास रिस्क लेने का एटीट्यूड है सी मैं गुजराती हूं एंड वी नो द बिजनेस एंड बिजनेस का एक ही फंडा है हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट सो अगर 8:30 को आपका एक्सीडेंट होता है और 9 o'clock आप मेंस की एग्जाम देने जा सकते हैं इंटरव्यू से पहले 1 महीने तक आप हॉस्पिटलाइज्ड है और उससे 1 वीक पहले आप दिल्ली जाके उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं तो लक हैज टू कम विथ यू उसको आना पड़ेगा और आपको आईपीएस बनाना पड़ेगा लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट के बाद आप जाके आए एंड ऑल तो द सिंपल था कि मैं एग्जाम के लिए निकला मेंस मेरा था सुबह जीएस3 का पेपर था 8:30 को मेरा स्कूटी स्लिप हो गया मेरा लिगामेंट इंजरी हो गया लेफ्ट हैंड में इंजरी था सीट से ब्लीडिंग हो रहा था लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन थे मैं खड़ा हुआ मैंने देखा ओके माय राइट हैंड इज सेफ एंड आई डिसाइडेड आई गो टू द एग्जाम हॉल एंड राइट द एग्जाम मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे या तो मैं वहां से उठ के रोने लगूं यार मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ मेरा एक्सीडेंट हो गया मेरा मेंस खराब हो गया और हॉस्पिटल जाओ या दूसरा ऑप्शन था कि मैं देखूं कि मैं 3 घंटे और सरवाइव कर सकता हूं हाँ कर सकता हूं मैं मेंस के लिए एग्जाम हॉल में गया ये जितने भी फोटोग्राफ्स लगे हैं सर ने जैसे बताया कि जितने भी इंसान सक्सेसफुल हुए अगर आप उसकी लाइफ स्टोरी देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट आता है जहां पे वो इंसान की जो स्ट्रगल है वो पीक पे हो जाते हैं वो इस मोमेंट पे आपको डिसाइड करना है कि आपको वहां से यू टर्न लेना है या आपको वहां से आगे निकलना है इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि उनको वहां से आगे निकलना है एंड दैट इज द फंडा ऑफ लाइफ सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो इस स्ट्रगल वाले मोमेंट से आगे निकलने की सोचते हैं जब भी आपको लगे कि आपके सिर पे बहुत मुसीबत है जब भी आपको लगे कि आप हर तरह से गिर चुके हैं जब भी आपको लगे कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तब एक चीज आप अपने दिमाग में लाइएगा कि यही मोमेंट है जहां से आपकी तकदीर बदलने वाली है क्योंकि डायमंड जो होता है वो जितना ज्यादा घिसता है उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू होती है सोना जो होता है वो जितना ज्यादा तपता है उतनी उसकी वैल्यू होती है अगर आप जिंदगी में तप रहे हैं अगर आप जिंदगी में घिस रहे हैं अगर आपको लग रहा है कि आप हर तरह से मुसीबतों में गिरे हुए हैं तभी आपकी जो वैल्यू है वो बढ़ने वाली है और यही मेरा एटीट्यूड रहा है लोग बोलते हैं कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी पापा इलेक्ट्रिशियन थे मम्मी हाउसवाइफ थी डायमंड के कारखाने में काम करती थी उसके बाद उन्होंने मैरिज में रोटियां बनाने का काम किया और उस तरह से मैं पढ़ा लेकिन जब मुझे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी चीज है आपकी लाइफ में जो आप बदलना चाहते हो आई सेड नथिंग क्योंकि वो चीजें नहीं होती मेरी लाइफ में तो शायद आज आपके सामने में नहीं होता तो अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स है अगर लाइफ में स्ट्रगल है जैसे सर ने बोला है स्ट्रगल इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट क्योंकि हम दिल्ली में थे मेरे दोस्त के साथ में निकला बाहर घूमने तो बोलता है यार ऐसी लाइफ चाहिए कोई मगजमारी नहीं आराम से बैठते हैं पूरे दिन एसी वाले कमरे में बहुत सारे पैसे है और कोई टेंशन नहीं ऐसी लाइफ चाहिए मुझे मेरे पास ऑप्शन है बोलते क्या बोला देख सामने एटीएम का रूम दिख रहा है एसी वाला कमरा है बहुत सारे पैसे कोई मगजमारी नहीं जॉब ले ले क्यों आईएएस आईपीएस में दिमाग खराब कर रहा है
अगर स्ट्रगल नहीं चाहिए तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद दैट लाइफ। जब भारत वर्ष का सपना चंद्रगुप्त ने देखा, चाणक्य ने देखा, और उस भारत वर्ष को बनाने के लिए जब ये संघर्ष जारी था, और तब राजा धनानंद की डॉटर दुर्धरा से चंद्रगुप्त को प्यार हो जाता है, और जब चाणक्य उनको बोलते कि नहीं, तुम्हें उससे दूर रहना है, और तब चंद्रगुप्त बोलता है, आचार्य कभी कभी सोचता हूं कि जिंदगी में या ये भारत के सम्राट बनने के लिए इतना त्याग, इतना बलिदान ना देना होता तो। और तब चाणक्य रिप्लाई करते हैं, तो हर कोई भारत का सम्राट होता। दिस इज द फंडामेंटल रूल ऑफ लाइफ। अगर आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए सैक्रिफाइस करना नहीं पड़ेगा, अगर उसके लिए आपको त्याग नहीं करना पड़ेगा, तो आज पूरे इंडिया में हर घर में आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएंगे। So when you are entering into this game of UPSC or MPSC, make sure that you have to sacrifice anything which will take you to your goal. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें टेंशन होती है, यार दोस्त की एंगेजमेंट है, उसकी बर्थडे पार्टी है, उसकी शादी है, अटेंड नहीं करूंगा तो बोलेगा मैं तेरी शादी में नहीं आऊंगा, एंड ऑल। लेकिन बिलीव मी, जब आप आईएएस बन जाओगे, वो सामने से याद दिलाएगा, भाई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा तूने। समझ रहे हो? तो जो कुछ भी इसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो, वो जब आप उस पोस्ट पे पहुंचोगे, सब कुछ वर्थ है, सब कुछ। मेरा इंटरव्यू था यूपीएससी का, मुझे एग्जैक्ट डेट याद है, 23 मार्च को मेरा इंटरव्यू था। 20 फरवरी को मुझे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया क्योंकि मुझे इन्फेक्शन हो गया था बॉडी में, एंड बहुत हाई फीवर था, तो आईवी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। 1 मार्च को ठीक हो गया, मैंने सोचा चलो दिल्ली निकलते हैं। 2 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा। 3 मार्च को वापस से टॉन्सिलाइटिस का अटैक होने की वजह से फ्लाइट लेके वापस से पालनपुर, अहमदाबाद। अगेन हॉस्पिटलाइजेशन। 15 मार्च को आई गॉट रिलीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। 16 मार्च को मैं दिल्ली पहुंचा, और 23 मार्च को आई गिव माय यूपीएससी इंटरव्यू। तो 1 महीने का हॉस्पिटलाइजेशन। उसके बाद जब दिमाग में ये था कि मेरे साथ जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो 1 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंड 1 महीने से मैं हॉस्पिटल में था, अगेन आई थॉट दिस इज द मोमेंट टू प्रूव योर सेल्फ। आई वेंट टू द इंटरव्यू, और पूरे इंडिया में 2nd हाईएस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू फॉर द एंटायर लाइफ। कि जितने भी कंप्लेंट्स आपकी लाइफ में है, मैं यहां से आता हूं, मेरे पेरेंट्स ये करते हैं, मैं वो करता हूं, मेरा इंग्लिश अच्छा नहीं है, मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, ये सारे हमने अपने आप को दिए हुए एक्सक्यूजेस है। यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन बाय योरसेल्फ। अगर इंग्लिश नहीं आता है, आई कैन स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, और 5th स्टैंडर्ड बुक से भी शुरुआत करने में अगर मुझे अपना ईगो बीच में आ रहा है, देन आई कैन नॉट लर्न इट एट एनी स्टेज ऑफ माई लाइफ। स्टार्ट विद द 5th स्टैंडर्ड बुक, स्टार्ट लिसनिंग इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। अगर बोलने में शर्म आती है, अपने मोहल्ले के किसी 3-4 बच्चों को जो 1st 2nd स्टैंडर्ड में, उनको उठाओ और उनके साथ बातें करो। उनको वैसे भी समझ में नहीं है, और अपने को वैसे भी पता है अपन क्या बोल रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर वहां पे भी अगर ईगो बीच में आ रहा है, स्टार्ट डूइंग लाइक दिस, स्टार्ट स्पीकिंग। मैं 11th-12th में था, मुझे पता था मेरा इंग्लिश कैसा है, फिर भी आई यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता है सामने वाले को तो वैसे भी समझ में नहीं आ रहा है। अगर किसी मूवी में इंग्लिश डायलॉग सुन लिया, पूरा दिन मेरे दिन, मतलब जहां पे भी कोई भी बात करूंगा, मैं वहां पे वो डायलॉग घुसाऊंगा। दिस एटीट्यूड शुड बी देयर। तो लाइफ में जो मैं कंप्लेनिंग एटीट्यूड की बात कर रहा था, वो कंप्लेनिंग एटीट्यूड आपको कहीं पे भी नहीं ले जाएगा। यू हैव टू पुट ऑल योर कंप्लेंट्स असाइड, स्टार्ट प्रिपरेशन। क्योंकि आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब हमारे साथ थे चार्ली चैपलिन, जिन्होंने एक भी शब्द बिना बोले सारी दुनिया को एंटरटेन किया। आज भी दुनिया जब ये मानती है कि सिर्फ औरतें अच्छा खाना बना सकती है, हमारे सामने संजीव कपूर, जिन्होंने पूरी दुनिया को भारत का स्वाद चखाया। आज भी अगर दुनिया ये मानती है कि अकेले इंसान से कुछ नहीं हो सकता, हमारे सामने महात्मा गांधी, जो अकेले चले थे और पूरा देश उनके पीछे चला था। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि धनवान बनने के लिए
धनवान घर में पैदा होना जरूरी है। हमारे सामने धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने पूरी दुनिया को एक सपना दिखाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आज रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड की और इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है। आज भी दुनिया अगर ये मानती है कि हम कम एज, ज्यादा एज में कुछ नहीं कर सकते, हमारे सामने अमिताभ बच्चन, जो आज भी एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर मूवीज देते हैं। अगर आप ये मानते कि सिविल सर्विस में आने के लिए आपका बैकग्राउंड होना जरूरी है, आपके सामने शाहरुख खान विदाउट एनी बैकग्राउंड आज भी बॉलीवुड का बादशाह है। अगर आज तक दुनिया ये मानती थी कि हम सिर्फ धरती पे रहने के लिए बने हैं, हमारे सामने नील आर्मस्ट्रांग जो चंद्र पे जाके आए, आज तक हम ये जानते हैं कि हम क्या है, हम क्या बन सकते हैं, ये जानने का टाइम शुरू होता है अब। थैंक यू सो मच। So after watching this particular video, we will realize that we can do anything, means whatever may be our aim or objective, we can achieve it by hard work. Okay, so in the last lecture I would like to again highlight whatever may be the things we have covered, that is the critical depth. Okay, and it is denoted by letter Hc. So Hc is equal to, in bracket, q square by g raised to 1/3. Okay, then also we have derived one relation for the critical velocity, that is the Vc. So Vc is equal to under root GHc. Okay, now further relation we have derived in case of the non-uniform flow, that is the minimum specific energy. So the minimum specific energy should be 3/2 of Sc, that is the critical depth. And then the total energy Z plus H plus V square by 2G. So here if the Z will constant, because the channel is parallel or channel is horizontal, that's why this Z is constant. So the equation become for the total energy is equal to H plus V square by 2G. So this is the total energy in case of the non-uniform flow. So let us try to solve some of the important problems on the these 4 hydraulic parameter, that is the critical velocity, then critical depth. Okay, so I request all the students, please you also write that problems whatever I am going to write. Okay, the first problem is the discharge of, write down, the discharge of the discharge of water through the discharge of water through a rectangular channel of width 8 meter is 15 meter cube per second, is 15 meter cube per second. When the depth of the flow of water is, when the depth of flow of water, when the depth of flow of water is 1.2 meter. So we have to determine first specific energy of flowing water, specific energy of flowing water. Second, we have to calculate the critical depth and critical velocity. Secondly, we have to calculate critical depth and critical velocity, critical depth and critical velocity. And third, we have to calculate the value of minimum specific energy, value of minimum specific energy.
value of minimum specific energy. Okay. So this is a problem. Once again, I am going to read it. The discharge of water through a rectangular channel of width 8 meter is 15 meter cube per second. Okay, is 15 meter cube per second. When the depth of flow of water is 1.2 meter, width is 8 meter, and the depth of flow is 1.2 meter, and the discharge is 15 meter cube per second. So we have to determine first the specific energy of flowing water. Second, we have to determine critical depth and critical velocity. And third parameter, we have to calculate the value of minimum specific energy. Okay. So I request all the students, please make a separate notebook and try to write down all the problems under the hydraulics 2 notebook. Okay. So the solution of the given problem, first we have to write the given data. So whatever may be the data is given, first we have to write it. So what is given here? A rectangular channel is given. So first we have to write a rectangular channel. A rectangular channel is given. Then the discharge is given. How much is the discharge in the problem? 15 meter cube. So Q is given 15 meter cube per second. Okay. Second parameter is given, width of the channel. Okay, that is B is given 8 meter. Again the depth is given. Okay, depth of the channel is 1.2 meter. You can write this D or H. Okay, D or H. We can represent the depth by H or D. So if possible, try to sketch the diagram also. So here I am going to draw the diagram of the rectangular channel. So we have a rectangular channel. Okay, this is the rectangular channel having H, that is the depth of flow is 1.2 meter. Then the width is given B 8 meter. Okay, 8 meter is the width. And the discharge is also given, that is Q 15 meter cube per second. 15 meter cube per second is the discharge. Now we have to calculate to determine, it is asked in the problem to determine first the specific energy, that is E, what should be the E? Okay, then critical depth, that is SC, what should be the critical depth, and critical velocity, that is VC. And third, it is asked to determine the value of E minimum. Okay, so what should be the minimum specific energy of the flowing fluid. So we know that how to start the solution. This is the step by step procedure. So write down, we know that discharge per unit width of the channel. Okay, discharge per unit width of channel. Discharge per unit width of the channel, that is small q. Okay, small q is the discharge per unit width. So capital Q divided by B. Okay, so Q is equal to
The capital Q is given in the problem, that is the 15 meter cube. So write down 15, and the width of the channel is given 8 meter. So write down 8 meter. So what should be the 1.87. 1.875? Okay, meter cube per second. So this is the discharge per unit width of the channel. Okay, that is 1.875 meter cube per second. Once we have the discharge per unit width, then we can calculate easily the velocity of the flow. Okay, so the general formula for discharge, area into velocity. Okay, area into velocity. So we can calculate the velocity, therefore velocity is equal to discharge by area. So how will you calculate the area for rectangular portion? For example, we have the rectangular channel here. Okay, so h is given, how much is the h? 1.2 meter, and width is given 8 meter. Okay, so we can compute the area b into d, because this is the rectangular channel. Okay, so directly we have to write the discharge is 15 and b into d. Okay, b into d or h. So 15 into 8 into 1.2. So we will get the velocity. So what should be? 1.56. 562 meter per second. That is the velocity. This is the velocity, 1.562. Now first parameter we have to calculate. Now once we have the discharge per unit width and the velocity, then we have the formula for the specific energy. Okay, total specific energy. So total specific energy of the flowing fluid or of the flow in the channel. So we know that E is equal to H plus V square by 2G. So write down, substitute the value of this H and V, then you will be get the total specific energy. This is the general formula. Okay, so the depth of flow is 1.2 plus we have calculated earlier the velocity, that is 1.562 square divided by 2 into 9.81. Okay, 9.81. So this is 1.324. Okay, 1.324 meter. So this is the first parameter, hydraulic parameter we have got, that is the total specific energy of flowing fluid 1.324 meter. Okay, now the second hydraulic parameter we have to calculate, that is the critical depth. Okay, so write down critical depth, that is HC. Okay, so we know that HC is equal to, in bracket, Q square by G raised to 1/3. So we have the value of this discharge per unit width of the channel, that is we have calculated earlier, 1.875. So put the value in this equation, 1.875 square. Okay, divided by G, 9.81 raised to 1/3. So SC should be 0.71. Okay, so this is the value of your HC. Then we have to calculate the critical velocity, the third hydraulic parameter asked in the problem itself. We have to calculate critical velocity, that is Vc. Okay, we have to calculate critical velocity Vc. So Vc is equal to under root GHC. We know the formula GHC. Okay, GHC. So only we have to
substitute the value 9.81, okay, into, we have calculated the critical depth 0.71. So what should be the velocity, critical velocity? 2.3639. 2 point, 2.63. okay, 639. 3. Okay, so this is the critical velocity, okay, 2.639. Then the next parameter we have to calculate the minimum specific energy, okay. The fourth parameter we have to calculate minimum specific energy, minimum specific energy. So E minimum is equal to 3/2 of SC. So 3/2 into, we have calculated SC 0.71. 0.71. So what should be the E minimum? 1.065. Okay, 1.065 meter. 0.06. Okay, E minimum. So this is the value of E minimum, 1.065 meter. So at the end we have to write, hence in the result we have to calculate E. What is the value of E? 1.32 meter, okay, 1.32 meter. Then we have calculated SC and VC. SC 0.71 meter, VC is, we have calculated 2.639 meter, and E minimum, okay, E minimum is 1.065 meter. So this is the result we got for this particular problem, okay. Means if the discharge is 15 meter cube per second and channel width is 8 meter and depth of flow is 1.2 meter. For this particular parameter we will get specific energy 1.32 meter, critical depth 0.71 meter, critical velocity at the critical depth 2.639 meter, and E minimum 1.065. So while designing of the channel, okay, while designing of the channel on the site, these two parameter or this all the parameter is very important to design the most economical rectangular channel sections, okay. So this is how we can compute the you can say specific energy, then critical depth, critical velocity, and E minimum, okay. Now the next problem I would like to discuss in today's lecture. So write down the second problem, okay. So I will read the second problem, okay. That is the assignment for all of you. Wait 2 minutes. I am going to read the second problem as well. So write down the second problem. Water flow at the rate of water flows at the rate of
Second problem, water flows at the rate of 16 meter cube per second, 16 meter cube per second, okay, in a channel, in a channel 10 meter wide, 10 meter wide, at a velocity of 1.6 meter, 1.6 meter per second. Calculate the specific energy. Calculate the specific energy. Calculate the specific energy. Also find the critical depth and critical velocity. Also find the critical depth and critical velocity and the minimum value of specific energy and the minimum value of specific energy corresponding to this discharge in the channel, corresponding to this discharge in the channel, corresponding to this discharge in the channel, okay, corresponding to this discharge in the channel. So this is the given problem. Once I would like to read this one. Water flows at the rate of 16 meter cube per second in a channel 10 meter wide at a velocity of 1.6 meter per second. Calculate the specific energy. Also find the critical depth and the critical velocity and the minimum value of specific energy corresponding to this discharge in the channel. So this is the problem. So we have to write the solution now. So once again we have to write the given data, whatever may be the data is given, we have to write first. So a rectangular channel is given, so write down rectangular channel, okay. Then discharge is given. What should be the discharge? 16 meter cube per second is the discharge. Then 10 meter wide, that is width of the channel is given 10 meter, okay. Then the velocity is also given. Velocity is given now 1.6 meter per second, okay. Now it is asked to calculate the specific energy, okay. So we have to calculate, okay. What we have to calculate? Calculate first we need to calculate specific energy, okay, that is E. Second, critical depth and critical velocity,
critical depth, that is SC, and critical velocity, that is Vc. What should be Vc? And last, we have to calculate the E minimum. Okay, E minimum, minimum specific energy. So we have to calculate first the E, then critical velocity and critical depth, and the value of E minimum. So we can compute the area first, area of the flow. So the general formula for discharge. Okay, the general formula for this discharge, Q is equal to area into velocity. So discharge is known and velocity is known because it is given in the problem. So we can compute the area of flow. So A is equal to discharge by velocity, discharge by velocity. So discharge is 16 meter cube per second and velocity is 1.6 meter per second. So 10. what is the area? 10. 10. So 10 meter square is the area. 10 meter square is the now area. Now once we have the area, we can compute the specific energy. Okay. So the first hydraulic parameter we are going to compute, that is specific energy. Okay, that is E. So we know that E is equal to H plus V square by 2G again. So what is this H? What is this H? See here, H is 1 meter. Okay, how will you calculate the depth of flow? How will you calculate the depth of flow? Anybody? How will you calculate the depth of flow? This H, because it is not given in the problem. Area is given, sir. Area is equal to B into H. See here. But how will you calculate this H? Okay, that is the depth of flow in the channel. So A is equal to B into H. Okay, so H is equal to A by B. Okay, so 10 by 10, so it will be 1 meter. Okay, therefore H is 1 meter. So likewise we can find out the depth of flow. Therefore E is equal to now 1 plus from the equation 1. For example, this is equation 1. So 1 plus V square. The velocity is given itself in the problem, 1.6 meters, 1.6 square divided by 2 into 9.81. Okay, so calculate 1.10. Okay, meter. So this is the first hydraulic parameter. We got 1.130 meter, that is the specific energy. Okay, now we have to calculate the discharge per unit width. Okay, first we need to now discharge per unit width of the channel Okay, so small q is equal to capital Q divided by B. Okay, capital Q divided by B. Therefore 60 divided by 10. Therefore we will get discharge per unit width. So what should be the 0.6 meter cube per second. Okay, 1.6 meter cube per second.
So this is the small q. Then once we have the small q, we can compute easily the critical depth. So second parameter we are going to calculate critical depth. Okay. So critical depth, that is SC. So SC is equal to q square by g raised to 1/3. So this is the formula for critical depth. So 1.6 square divided by 9.81 raised to 1/3. Therefore, 0.639. So 0.639 is the critical depth. Okay. Then we have to compute critical velocity, third hydraulic parameter. Okay. We have to compute critical velocity, that is Vc. Okay. So we know that Vc again under root GHC. Okay, under root GHC. So under root 9.81, and we have calculated this critical depth earlier 0.639. 2.503. 2.486 meter. Okay, 2.503 meter. 2.486. No, this is correct. 2.503 meter Vc. Okay, critical velocity Vc. Then the fourth parameter we have to compute, that is minimum specific energy. Minimum specific energy, that is E minimum. We know that E minimum 3/2 of Hc. Okay, 3/2 of Hc. So 3/2 into Sc. We have calculated Sc 0.639. 0.639. 0.958. 0.958. 958 meter. So E minimum, therefore E minimum is 0.958 meter. So this is the a solution to this problem. Okay, this is the complete solution. First we need to write down the given data. Rectangular channel is given, then discharge is given 16 meter cube per second. The bottom width of the channel, that is B, is given 10 meter. Velocity is given 1.6 meter per second, and it is asked to calculate this 4 hydraulic parameter. What are those? Specific energy E, critical depth Sc, critical velocity Vc, and E minimum. What should be E minimum? So we know that general formula for discharge, area into velocity. So from this, two parameter are given, discharge and velocity. So we can compute the area of flow. So discharge by velocity, we will get the area, that is 10 meter square. Then we have to compute the specific energy, first parameter. So we know that specific energy is given by this equation, E is equal to H plus V square by 2G, and mark as a equation 1. But we don't know H, but we know that we have calculated earlier the area. So area is equal to, for rectangular portion, B into H. So from this we can compute the H, that is 1 meter. So substitute the value, we will get E, and E is 1.130 meter. And then
we have to calculate discharge per unit width of the channel. So per unit width, total discharge by width of the channel, we will get discharge per unit width, that is 1.6 meter cube per second. And the second parameter we have calculated earlier, that is the critical depth, that is SC. Okay. SC is equal to, and remember that in some book, okay, this is given as a DC, okay, or YC also. Remember, somewhere it is represented by a letter DC or YC or HC. The meaning is the critical depth, okay. SC is equal to Q square by G raised to 1/3. So we will get, after calculation, the value of critical depth 0.639 meter. Then we have calculated critical velocity with the help of this formula. Vc is equal to under root GSC. So we will get, after calculation, Vc is equal to 2.503 meter. And lastly, we were calculated the minimum specific energy, that is E minimum is equal to 3/2 of SC. So 3/2 into 0.639. So we will get E minimum 0.958 meter. So this is the, you can say, the step-by-step procedure for calculating this parameter. Okay. Now the next problem, last problem on the critical depth and critical velocity, I would like to discuss with all of you. Write down, that is the last problem on this 4 parameter. A rectangular channel, I am going to write the problem. So I request all the student, simultaneously you have to write. Third problem, a rectangular channel has bed width of 5 meter and depth of flow is 1.3 meter. Okay, 1.3 meter. The discharge is 20 meter cube per second. Then calculate first specific energy, second SC and Vc, and third E minimum. Okay, and third E minimum. So I request any one of the student, can you solve this problem? Yes, sir. Okay. Yes. So what is given here? Bed width is given 5 meter. Yes, sir.
depth of flow is given and the discharge is given. Calculate specific energy, SCVC and E minimum. Okay. So can you tell me the value of E? So I will write the answer directly, solution. So first write down given data, those are not confident. What is given? A rectangular channel is given. Okay. Then bed width is given 5 meter, depth of flow, that is H 1.3 meter, Q 20 meter cube per second, and we have to determine first E, second SC and VC, and third E minimum. Okay. So this is the things we have to determine. So what is the value of E? Anyone? 1.782. Okay. First is 1.782 meter. Okay. 1.782 meter. Then second, this is the answer directly. I am writing here. Then SC and VC. What should be the SC? 4. How much it is? 4. Only 4. Okay. 4 meter cube per second. Okay. 4 meter only. All these are in meter. Yes? 1.177 meter. Your voice is breaking. Hello. 1.1776. 1.177. This is wrong. Oh, sir. This is Yes, wrong. sir. 1.17. sir. 1.17. Okay. So this is the correct one. Okay. Then third, we have to calculate VC. VC is 3.39. 3.39. 3.39 meter. Okay. And fourth, E minimum. This is correct. This is correct. This is correct. 1.75. 1.75. Okay. So what we have to do in this? H plus V square by 2G. Okay. So with the help of discharge formula, we have to find out the velocity. Easy. SC, we can compute SC with the help of formula Q square by G raised to 1/3. So how will you calculate Q? So it is very simple. Q is equal to discharge by width of the channel. Okay. Capital Q is equal to area into velocity. So velocity is discharge by area. Likewise, we can compute